गाइस हमारे यहाँ बार बार बिजली गुल हो जाता है, इसीलिए हमने ये इन्वर्टर को बना लिया। इससे आप लाइट फैन कुछ भी चला सकते हैं 150 वाट तक। हमने पीवीसी शीट का यूज करके ये छोटा सा बॉक्स बना लिया है। इसमें हमने फैन भी लगा दिया है। अभी इसमें सॉकेट लगाना पड़ेगा। हमने 5 पिन सॉकेट और एक स्विच लेके आ गया हूँ। सॉकेट लगाने का एकदम इजी तरीका है। लेफ्ट साइड में एक रेड वायर लगा दीजिए और उसका कनेक्शन स्विच का एक पिन पे कर दीजिए। सॉकेट को बॉक्स पे लगाने से पहले हमें ये इन्वर्टर बोर्ड को बॉक्स पे लगाना पड़ेगा। जल्दी से इसको लगा लेता हूँ, फिर आपको कनेक्शन दिखाता हूँ। हमने इन्वर्टर बोर्ड को अच्छे से फिक्स कर दिया है बॉक्स पे। अभी हमें ये जो वायर है लेफ्ट साइड का, वो पतला वाला वायर, ये एसी वाला वायर है, इसको स्विच के एक साइड में लगाना पड़ेगा। जो ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर है उसको सॉकेट का राइट साइड में लगाना पड़ेगा। हमारा सॉकेट एंड स्विच अच्छे से फिक्स हो गया है। अभी फैन का जो माइनस है और इन्वर्टर का माइनस है, सब एक साथ जोड़ना पड़ेगा। हम भी इसको जोड़ लेते हैं, आप भी ऐसे ही जोड़ लेना एक साथ। हमारा कुछ जो बैटरी था उसको हमने अपडेट कर दिया और 9000 mAh का बैटरी बना लिया है। अभी इस बैटरी को इधर चिपका देता हूँ अच्छे से। हमने डुअल साइड टेप का यूज़ किया है, आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। अभी इसको चिपकाने के बाद इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। बैटरी का जो नेगेटिव है, जितना सारा नेगेटिव निकला हुआ है, सब पे एक साथ जोड़ दीजिए एंड सोल्डरिंग कर दीजिए। इसमें टेप लगाना मत भूलना, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देखिए हमने पीवीसी शीट पे बहुत सारा होल कर दिया है एयर पास होने के लिए और स्विच भी लगा दिया है। अभी ये 12 वोल्ट का सॉकेट, चार्जिंग सॉकेट लगाऊंगा
क्योंकि बैटरी को भी तो चार्ज करना है। ये सॉकेट के बिना बैटरी कैसे चार्ज होगा। इस सॉकेट को अच्छे से टाइट कर लेना, नहीं तो ये निकल जाएगा। मैंने इसमें तार पहले से ही लगा के रखा हूँ। ये जो रेड वायर है ये है प्लस और ब्लैक वायर है माइनस।